stage is all yours. Please proceed. Thank you. Really appreciate it. Thank you. So, good afternoon, everyone. Really appreciate for your time, and it's lovely meeting you again after a year. And this is the second time that we are organizing this event, and really appreciate for all the organizers, sponsors, especially the team of Pakistan User Group. बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं and आज जो हम बात करेंगे specifically we will be talking about the business process reengineering and specifically we will talk about the business process mapping. What are the parameters? What are the you can say the steps that you can take it? तो ये bilingual होगा तो it totally depends on the flow. So let's start our session. If the people who don't know about me, my name is Adnan Jalees, and let me just do one. Yes, my screen is popped off here. My name is Adnan Jalees, and I'm solution architect and a Dynamics 365 practice lead in lead services based in UAE. And I have been managing all of the projects across the Middle East, UK, and Africa region from mid to enterprise sectors. Or specifically, my core expertise are on Dynamics CE platform, the CRM application, and along with it, I'm also be a part of the project management, training, consultancy. So सब चीजें एक साथ चल रही होती हैं. Or if you want to approach me personally, you can reach out to me on LinkedIn or you can send me email. और इसके साथ अगर आप हमारा जर्नी ज्वाइन करना चाहते हैं तो D4 Dynamics me and Wahaj we started up one you can say concept a year ago. तो उसमें हम जो है weekly or once in a you can say 15 days we are organizing our sessions over there. तो let's start our session here. पहले तो हम बात कर लेते हैं what is all about business reengineering. इसका बेसिक मकसद क्या होता है, इसकी नीड क्या है, क्यों हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं. First of all, it's just like a definition about it. What's all about reengineering? It involves around, you can say, examination, redesigning the core business processes, which are, you can say, being used to achieve your precious, you can say, improvement, productivity, efficiency, and the quality here. अब क्यों इसको हम कर रहे हैं, इसके रीजन सिर्फ ये हैं कि एज यू नो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजी रिवैम्प हो रही है, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, न्यू स्टैंडर्ड्स आ रही हैं, तो कंपनी दे वांट्स टू डिजिटलाइज देयर स्टफ, दे वांट टू improve, they have to efficient in the word processing as well as the data processing that what they are looking for it, or definitely the quality of the data they are looking for it. तो उसको improve करने के लिए बिजनेस इंजीनियरिंग का जो मेथोलॉजी है वहां अप्लाई की जा रही होती है. अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपके स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं विच वी नीड्स टू फॉलो. अब वो प्रैक्टिसेस क्या होंगी, किस तरह से होंगी, वही हम आपके सेशन के अंदर नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर हम वो सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे होंगे. अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सिनेरियोस कौन कौन से हो सकते हैं. देयर कुड बी 4 सिनेरियोस in which first of all हमारे पास न्यू इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है डायनामिक्स 365 की. It could be CRM application, it could be finance and operation, it's a power platform, it could be any kind of the ecosystem, or it could be hybrid implementation. तो पहला तो सिनेरियो ये है कि हमारी न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वी आर टेकिंग आउट और मूविंग आउट फ्रॉम द लेजेसी एनवायरनमेंट टू अ न्यू सिस्टम हियर. न्यू इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर लेंगे, फिर हमारी बात कर लेते हैं कि there is a change is going to be happen. आप ऑलरेडी एक अप टू डेट सिस्टम के अंदर हैं और उसके अंदर कोई आप प्रोसेस ऐड अप करने लगे हैं, उसके चेंजेस के हवाले से क्या सिनेरियो बन सकता है. देन वी विल टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉड्यूल्स. कि आपका करंटली माइट बी पॉसिबल योर कंपनी is working on the sales module. Now they have to move out or they have to include the marketing application as well as they want to interact with the customers through the customer service platform. तो उसके लिए मतलब मॉड्यूल्स आपका एडिशन हो सकता है. देन देयर कुड बी अपग्रेड.
कि आप on-prem environment में हो, now you are planning to move to the online environment. So there could be a 4 possibilities if we talk about on a, you can say, high note there. अब हम बात करेंगे कि लेट्स से व्हाट आर द मेन सेगमेंट्स के हमारे पास क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम मतलब उसके अंदर एरियाज हैं दैट वी हैव टू कंसिडर अबाउट इट बाय द टाइम दैट वी आर गोइंग इनटू अ बीपीआर सॉल्यूशन। पहले तो हमारे पास बात आ जाती है कि बिजनेस प्रोसेस ओनर कौन है हमारे। दिस इज व्हाट इट्स वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई who owns the business, who owns the particular segment of that area। मतलब मैं एग्जांपल बात करता हूँ इंक्वायरी की कि who is taking care of the inquiries, who is processing, who is the authority to manage, what are the standards, what are the protocols they are going to follow। तो first you need to identify that the business process ownership किसके पास है, who are the main person who can give you the knowledge, who can give you the information of related to the previous implementation, whatever it was done earlier। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के की स्टेक होल्डर्स मींस हु आर द अप्रूविंग पार्टीज हु आर गोइंग टू कंसिडर द मेन सेगमेंट ऑफ इट। सो दिस इज वेरी नेसेसरी टू इट। तो उनके लिए फिर हमारे पास है कि उनका नेक्स्ट लेवल क्या है, मींस व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट दे वांट टू अचीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन द डायनामिक्स 365। तो उनका फोकस एरिया क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट आर द विजन दे आर लुकिंग फॉर इट। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपका वैल्यू एडिशन क्या होगी। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट कि what are the additional benefits in terms of time saving, in terms of the productivity, in terms of the cost saving, in terms of the revenue generation, what are the ROI factor that we are going to capture। इसके अंदर हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है की स्टेक होल्डर्स की एज वेल एज बिजनेस प्रोसेस ओनर्स की। फिर हमारे पास एक सेगमेंट आ जाता है क्रॉस फंक्शनैलिटीज का, बिकॉज एज यू नो द डायनामिक्स 365 is a complete ecosystem, but again there are some different stakeholders who are working on their specific domain। कि अगर बैक ऑफिस का पर्सन है, he is working morely on the back office operation in terms of accounting, in terms of finance, in terms of the managing all of the payrolls, the operation stuff। But along with it, you have the CRM solution and it is going to be integrated। मतलब आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन होंगी, आपके कस्टमर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, आपके जो भी आप सेल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी लिंक by the end of the day or by the you can say the real time। so what are the cross functionality that you're looking for it specifically। अगर मैं बात करूं CRM के ऊपर भी again there are some dependencies across the departments here। तो उसमें आपका सेल्स का भी है, उसमें आपका मार्केटिंग भी है, कस्टमर सर्विस भी है। तो these are the all peoples who are going to interact, different roles and responsibilities हैं। so what are the combination that you are going to look into it, or more importantly that we have it here about the research। बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, आपकी अपनी रिसर्च कितनी कंप्लीट है, व्हाट आर द अपडेट्स दैट यू हैव इट in order to transform the legacy system to the new environment। And the project management, that's more important, because the project management it could be belong to in each and every aspect of the project execution or a program execution। Because in BPR solution implementation, normally it becomes a program, not a project। तो प्रोग्राम में आप डिफरेंट सेगमेंट्स को रन कर रहे होते हैं, और दैट पर्टिकुलर सेगमेंटेशन यू हैव अ डिफरेंट चंक्स ऑफ द वर्क दैट पीपल आर डूइंग। सो वो कैटेगराइज हो जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट चला जाता है प्रोग्राम के अंदर। अब वो आप पूरी उसकी मेथोलॉजी, उसके सारे फ्रेमवर्क्स यू आर गोइंग टू डिफाइन इट देयर इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें रिसर्च वर्क भी आपका कंटिन्यूशन में चल रहा होता है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी चल रही होती है, और अलॉन्ग विद इट द डिटेल्स दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, ये सब इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। अब हमारे पास जो सेगमेंटेशन में जो बात करेंगे कि भाई प्रोसीजर्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। कि हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई हमने स्टेक होल्डर्स की फोकस पॉइंट भी निकाल लिया है, हमने उनकी ओनर्स भी निकाल लिए हैं, हमने डिसाइड भी कर लिया है कि हम क्या करने लगे। तो व्हाट आर द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। until unless you don't have an idea कि भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, what are the processes they are running, either they what are the steps they are
taking care in the sales execution, कस्टमर जर्नी जो ड्राफ्ट होता है आपका सेल्स जर्नी, वो किस तरह से है, उसके की एलिमेंट्स क्या हैं, implementation किस तरह से हुई हुई है. So first, the team he should understand the existing business model, whatever the processes are configured. फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि assessment and the analysis of the gaps which are there. अब इसके अंदर आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास definitely there's a lot of key information is missing. Let's take example automation. Email are not going to be sent, or there are some automatic segment that you need to be focused on the marketing segmentation. वो information नहीं है आपके पास. So this is what we are going to do it by assessing the existing business processes, and we are going to analyze कि भाई उसके अंदर gaps कहाँ आ रहे हैं और उसका जो system कहीं disconnected तो नहीं है. Disconnected means there might be possible the people are using the system. The sales transaction going to be happen on CRM. In finance and operation, there is nothing there. Now you have to identify, okay, is if there is no information is linked, then how you can achieve it there. If you are online or if you are working on-prem, online hai, how you're going to use the dual right, how you're going to use the data integrator or logic apps, whatever the you can say integration possibility that you are going to do it online. Along with, let's take example, if the customer or organization is using the on-prem solution, so उसकी क्या possibilities हो सकती हैं कि भाई हम SSIS पैकेज में हम जाएंगे या कस्टम डेवलपमेंट में जाएंगे या कोई कनेक्टर हम यूज करेंगे. तो these are the all gaps that you are going to identify by that time that you have already assessed the existing business processes. अब अगेन उसमें बात आ जाती है हमारी डिपेंडेंसीज की, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू असेस द डिपेंडेंसीज. मतलब कहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट हैं, आप स्टेक होल्डर पर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट एरिया. यू हैव द रिस्क, you have the issues that you are going to identify. So all of the dependencies that you have to identify in terms of dependencies कि कहाँ आपकी हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, ह्यूमन हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हैं, या लेट्स से कोई पॉलिसीज जो है आपने चेंज करनी है. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू असेस ऑल ऑफ द डिपेंडेंसीज ओवर देयर. अब इसमें डेफिनेटली whenever we are talking about the business process reengineering, business revamping, digitalization, तो उसमें डेफिनेटली there are gaps to be filled in to improve the fundamentals. अब आपकी जो बेसिक्स हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या कंपनी की पॉलिसीज हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू improve it there by considering कि what are the steps that you are going to take. Means आपने गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी है, आपके कोई रिलेटेड पार्टीज हैं, रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, you have to consider them, or there is a group of companies who are going to merge together, or there is an acquisition is going to be happen. तो वो किस तरह से हम उसको करेंगे. तो फंडामेंटल डेफिनेटली this improvement is going to be happen at that stage there. फिर अगेन हम बात करेंगे उसके डिजाइन ऑफ द फ्यूचर प्रोसेस मैप्स कि आप एक तो चीज है जो आपकी एग्जिस्टिंग में है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नोटेड है, इवन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट अब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स देयर. फ्यूचर में आपके प्रोसेस क्या होंगे, तो डेफिनेटली देयर आर सम skeleton that you are going to build, or the blueprint that you are going to build, how the system will look like. So definitely it's going to be happen there. Then आपके पास आ जाता है your technology that you are going to use. You are going to finalize all of the technologies. What are the key areas that you are going to consider? How the process flow they are working on it. What are the authorization, authentication, approval mechanism going to happen? What are the output that you are expecting from the system? How the reports are going to be generated? What are the dashboard? What are the charts? What are the views that you are going to use? तो उसमें आप टेक्नोलॉजी को देखते हुए आप सारे आइडेंटिफाई कर होते हैं कि भाई आपने पावर ऐप प्लेटफॉर्म में जाना है, हमारा पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर विच इज द डेटावर्स, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड, और यू आर गोइंग टू टेक अप द सीआरएम एप्लीकेशन देयर. तो ये सब चीजें हम फाइनलाइज कर लेंगे. अलोंग विद इट यू हैव द on the background you have the ERP in terms of business central, you have the finance and operation. So how you are going to do it, अगर it's a small size है, business central use करना है, so what are the key factors that you are going to look into it. तो ये सारे consideration हम लोग कर रहे होते हैं, और these are the all procedures that needs to be taken care by the time that you are going to start the BPR solution there. अच्छा, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स देयर, कि मतलब उसके फेजेस क्या हमारे पास आने वाले हैं. तो हम फेजेस की हम बात करेंगे, तो फेजेस में हमारे पास पहला जो पार्ट आता है वो तो सिंपल प्रोजेक्ट किक ऑफ है.
अब इसके अंदर आप क्या बात कर रहे हो कि जिसके अंदर आप गोल डिफाइन कर रहे हो, आप टीम डिफाइन कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हो, आप ये डिफाइन कर रहे हो कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, आपकी कमिटमेंट क्या है स्पॉन्सर से, मतलब जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर है उसकी कमिटमेंट क्या है, व्हाट कुड बी द प्रोजेक्ट रिस्क, माइलस्टोन्स, आपके डिलीवरेबल्स क्या होंगे. सो दीज आर द ऑल पैरामीटर्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द और यू डॉक्यूमेंट इन द प्रोजेक्ट किक ऑफ देयर. अब इसके अंदर आपके पास ये भी हो सकता है कि आप उसके अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी आप डिस्कस कर सकते हो, आप उसमें मेंशन कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. ऑल्सो देयर आर सम थ्रेड एनालिसिस दैट यू कैन रिपोर्ट इट हियर. Might be possible by applying the, you can say, business process automation. Might be possible there are some risks of the resistance that you can face it from the customer end or business stakeholder की side से. So this is the all information that you are going to grab it there at the project level or project kickoff level there. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जब हमने प्रोजेक्ट किक ऑफ कर दिया, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू और वी आर मूविंग इनटू डायग्नोसिस स्टेज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनालिसिस. वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड दैट व्हाटएवर द प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड एज इज, जो कि आपके एग्जिस्टिंग के अंदर है, और टू बी हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन. तो ये सारे आप इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कैप्चर करना शुरू कर देते हैं कि कस्टमर अभी एज इज क्या यूज कर रहा है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स दे आर मैनेजिंग, और उनका प्रोसेस क्या हो सकता है या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. और इसके अंदर आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है उसके अंदर ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इफ देयर इज एनी डिले, इफ देयर इज एनी कॉम्प्लेक्सिटी, इज देयर एनी एसेट इज रिक्वायर्ड बाय द टाइम दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज, वो क्या चीजें आएंगी. तो सारा का सारा आप प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं. Along with it, we also talk about the documentation also. Okay, we कौन सा document कहाँ पे relevant करेगा, particularly if we talk about any scenario there. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है consulting. Consulting में ये कि the people from the technology, people from the business domain, they are going to sit together. So there could be possible that you have the business consultant or you have the IT consultant, and they are going to sit together where they are going to finalize the objectives. They are finalizing the scope. They are also finalizing what are the procedure they are going to take care. प्रोसेस के आपके चैंपियंस कौन से होंगे, किक ऑफ मीटिंग्स कैसे होंगी, ये सब चीजें हम जो है उसके अंदर कंसल्टिंग जो है फर्म जो है या कंसल्टिंग जो पीपल हैं, दे आर गोइंग टू एडवाइज यू बाय द टाइम दैट यू आर गोइंग टू whatever the process that you have it, based on the requirements you are going to take care of it. Okay? अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास बहुत से प्रोसेस और भी रहते हैं जिसके अंदर हम ने तो आइडेंटिफाई कर लिया प्रोसेस क्या है, कस्टमर की नीड क्या है. इसके अंदर और चीजें भी आ जाती हैं जिसके अंदर आप गैप का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें आप रिकमेंडेड सोल्यूशन आप डिफाइन कर देते हैं. इफ देयर इज एनी नीड ऑफ द रीडिजाइनिंग द एलिमेंट्स, अगेन कम्स टू द चेंजिंग द बिजनेस मॉडल, वो आपके पास आ जाएगा. फिर अगेन यू हैव टू डिफाइन द रोड मैप. ये आपको सारी स्ट्रेटेजी जो है इस स्टेज के अंदर मिल रही है. अब ये सब चीज अब जब आपके पास हो जाएंगी, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, कि उसके अंदर एज इसको देखते हुए, टू बी को मैप करते हुए आप सोल्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे होंगे, और उसके साथ आप ये भी मेंशन कर रहे होंगे कि भाई हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन देयर. अब जब आपके पास प्रोसेस रीइंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका एक ब्लूप्रिंट भी निकल रहा है कि बेसिकली whatever you have agreed to the customer, whatever you agreed with the organization, आप इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हाउ द सॉल्यूशन विल वर्क, इट्स जस्ट लाइक अ प्रोटोटाइप दैट यू आर गोइंग टू शोकेस दैम. अब इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें ट्रायल इंस्टेंस भी बना रहे हैं, आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर ही आपने एक ब्लूप्रिंट environment setup कर लिया है, where you are going to execute all of the business model which are going to be happen in the near future. Okay? फिर हम बात करेंगे कि भाई उसके अंदर चेंज मैनेजमेंट अगेन, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन एवर you have the scope in line at the early stage, sometime or not sometime, majorly it happens कि customer doesn't know about any information, or organization people doesn't know about the insight fully, because people might be possible that people have changed, और कोई न्यू टेक्नोलॉजी हर्डल्स आती हैं, बॉटलनेक बना हुआ है, और there are something change in the decision,
और प्रोसेस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज आ गया है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चेंज इट थ्रू द चेंज मैनेजमेंट देयर, क्योंकि आपने जो इनिशियल रिक्वायरमेंट ली थी, बाय द टाइम द डॉक्यूमेंटेशन वर रेडी, यू अप्लाइड द प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, आपने ब्लूप्रिंट भी रेडी कर दिया है, बट अगेन देयर आर चेंज इज रिक्वायर्ड। तो कंप्लीट चेंज मैनेजमेंट का जो उसमें प्रोसीजर होते हैं, वो आप उसको अप्लाई कर रहे हो। फिर आपके पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वंस एवरीथिंग इज एग्रीड, नाउ what you are going to do, you are going to work on the migration strategy, migration plan, क्योंकि आपने जब एक इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना है, अब दो चीजें हैं इसके अंदर। आपके पास ये है कि आप पूरा का पूरा एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन के ऊपर जा रहे हो, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, you are working on SAP environment or Oracle environment, now you are moving to the Dynamics 365 environment. So what is the data माइग्रेशन पॉलिसी दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई? कौन सा डेटा आप लेके जाओगे? ओपनिंग बैलेंस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ट्रांजैक्शन जाएंगी कि नहीं जाएंगी? व्हाट अबाउट माय पास्ट एक्टिविटीज, व्हाट एवर माय सेल्स ऑर्डर प्रोसेस है, मार्केटिंग कैंपेन अगर मैंने कोई दूसरे सिस्टम में की है तो वो क्या होगी? इसी तरह से जब आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन के अंदर जाओगे, मिसाल के तौर पे आप ऑन प्रेमिस एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो Dynamics 365, but now you are planning to move on the online version. So what are the information that you are considering to move from on-prem to ऑनलाइन? तो इसमें सारी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि भाई ये चीजें किस तरह से मैप आउट हो रही हैं, और उसकी अगेन स्ट्रेटेजी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट द टीम हु इज इन्वॉल्व इन द बीपीआर, दे मस्ट एग्जीक्यूट द अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा होगा। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपके टॉप टू बॉटम वर्कशॉप्स एग्जीक्यूशन जितनी भी हो रही हैं, उसके अंदर साथ में आपके पास बैक टू बैक सेशंस हो रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर। अब जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो मेन इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अगेन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, बिकॉज दीज आर द ऑल फेजेस दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। Again, for each and every phase, there will be a project management. But now, as you are going to move to the transformation, definitely you would require a separate team, or you would require a separate set of the stakeholders who are going to execute the project for that particular PPR requirement there. अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारे पास ये तो चीजें हो गई हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट? कि हमने बात की, हमने प्रोजेक्ट किक ऑफ किया है, प्रोजेक्ट किक ऑफ के मेन पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, हमारे पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है, तो देन यू हैव टू कंसिडर अबाउट द इनसाइड सेगमेंट कि उसके स्टेप्स क्या होंगे फॉर टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर। उसके में हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई एक आपका जो प्रोसेस जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपका जो फेज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इट कुड बी फेज, इट कुड बी प्रोसेस, यू कैन ड्रिल डाउन एट एनी लेवल, दैट वुड नॉट बी एनी इशू हियर, इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द स्टेप ओवर देयर। सो फर्स्ट is related to brainstorm, that you have to consider brainstorming there, means where you are going to collect the ideas, you are going to set up, means might be possible process नया है, no one knows about it, now you are going to start thinking about it with the new rules and regulations, or what are the procedure that you are going to follow. अब ये भी हो सकता है कि आपका existing process है, you are going to revamp it, and again then you are going to sit together and you are going to brainstorm by that with the team, that क्या होने लगा है इस प्रोसेस के अंदर, क्या हम बात करने लगे इसके ऊपर, कि ताकि हम उसको evolve कर सके to the next level. Again, based on the brainstorming sessions, based on the workshops that you have conducted to the stakeholders, with the business process owners, you are going to create a checklist there. Definitely there will be a roles and responsibilities will be there. वहां पे आप डिफाइन कर रहे हो कि भाई कौन क्या काम करेगा, तो आप चेकलिस्ट बनाओगे। देन आपके पास क्या आता है कि आपके पास checklist के बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशंस कर रहे हो। एग्जीक्यूशंस मींस हु इज रिस्पांसिबल, हु इज गोइंग टू टेक केयर, फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, कौन आपको इंफॉर्मेशन देगा, उसके डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा, उसका बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो मैप हो रहा है, सोशलाइज हो रहा है, तो उसको कौन मैनेज कर रहा है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर फेज ओवर देयर। फिर हमारे पास आ जाता है कि जब हमने सब चीज कर दी, देन यू आर गोइंग टू रोल आउट। अब रोल आउट में आप क्या कर रहे हो कि इट्स जस्ट लाइक इंफॉर्मेशनल बेस, दैट यू आर गोइंग टू शेयर द नॉलेज टू द स्टेक होल्डर्स। इफ इट इज रिलेटेड टू द सिस्टम, दैट यू आर गोइंग टू start deploying it there, or you are going to conduct some deliverables over there. So again, for each and every segmentation, there will be a different procedure that you are going to take care of it by the time that you are going to roll out.
तो ये सारे आप स्टेप करते हैं, फोर्थ लेवल स्टेप, व्हेन एवर इट इज गोइंग टू बी हैपन इन अ फॉर्म ऑफ एनी process, you can say reengineering, by the time that you are going to execute it. अच्छा, अब हम एक बात कर लेते हैं कि you have a lot of processes, there is a complete complex architecture is there, आपके पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, if you see in the ecosystem there are hundreds of the key features are there. कैसे आइडेंटिफाई करें व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस, क्या हम उसके लिए स्ट्रेटजीज डिफाइन कर सकते हैं? उसके लिए जो हम प्रैक्टिस जो मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ या जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं वही होता है कि टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीडेड एट दिस लेवल और इन द फ्यूचर, वेयर यू आर गोइंग टू डिफाइन कि इसमें जस्ट लाइक हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर जो है हम डिफाइन करेंगे कि भाई एक सिंपल स्ट्रक्चर के एक हमारा हेडर है जो कि आपका ये कह लें कि कॉलम्स हैं और एक हमारे पास यहाँ पे रोज हैं। व्हाट दे आर एलेबोरेटिंग, दे आर गोइंग टू एलेबोरेट कि जो फीचर्स आपको चाहिए और जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, यहाँ पे आप मेंशन कर लो। अच्छा, अब इसके कॉलम्स कैसे होंगे? कॉलम में हम क्या डिफाइन कर रहे होंगे? कॉलम में हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे कि जो जो आपको फीचर्स, इट कुड बी ड्रिल डाउन वेरी, यू कैन से बेसिक इंफॉर्मेशन टिल द हाई नोट। अभी जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस आई जस्ट मेड अ हाई लेवल हियर कि हमें जो है इंक्वायरीज मैनेज करनी है, वी हैव टू मैनेज कस्टमर्स, वी हैव टू मैनेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वी प्रिपेयर कोटेशंस, ऑर्डर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, हम कंप्लेंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। देन वी हैव अ मार्केटिंग मॉड्यूल वेयर वी रन द मार्केटिंग कैंपेन्स, और we have also ability to send the service to capture all the customer feedbacks. वो सारे लिस्ट डाउन हम कर लेंगे। It could be endless. Again, you have to define what are the main areas. So it could be multiple level of the documentation that you are going to define in this stage here. Okay. अच्छा, यही चीज हम क्या करेंगे, यहां पे हम उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे अपने रोज के अंदर भी। ठीक है, अब इसका फायदा हमारे पास क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक सेगमेंटेशन हमारी यहाँ बन गई है। सॉरी, मैं वापस आता हूँ, मेरा क्लिक मैंने ज्यादा आगे चला गया मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास सारे बन के आ गए, ये हमारे पास फीचर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, और वो ही फीचर उसी पैटर्न पे हमने लिस्ट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसका हमारे पास ये है कि हमने लिस्ट डाउन करने के भाई क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक सेगमेंटेशन तैयार हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करने लगे नेक्स्ट लेवल में कि हम सिंपल ब्लॉक्स मेंटेन कर देंगे, मैनेज मतलब नोट कर देंगे उसके अंदर कि भाई जो रिलेटेड वन है वो हम ब्लैकआउट कर दें, क्योंकि आपके पास जो है जो रिलेटेड सेगमेंट्स आपके मिल रहे हैं आपने क्या किया, उनको लॉक कर दिया गया। फिर हमारे पास अब आइदर यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन वर्क ऑन दिस लेवल और यू कैन वर्क ऑन द अपर लेवल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो प्रेफरेंस होती है कि मैं उसको नीचे वाले पे यूज करता हूँ ताकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, देन यू कैन ड्रिल डाउन टू द मोर सेगमेंट्स देयर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हाईलाइट कर देंगे जो कि आपका एक वर्किंग एरिया है जहां पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई ये कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एक जस्ट लाइक इस किस्म की शीट आ जाएगी जिसके अंदर हमारे पास एक अपर सेक्शन है और एक बॉटम सेक्शन है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंस की एलिमेंट्स वहां पे डाल रहे होंगे। इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है कि भाई हमारे ऑप्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ऑप्शनल इंफॉर्मेशन क्या होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि एप्लीकेबल नहीं है उस जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। अब मैं एक जेनेरिक और एक वैनिला इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें हम कहते हैं कि भैया हमारे पास इंक्वायरीज हैं। सो इन द इंक्वायरीज आई डोंट नीड टू मैनेज द कस्टमर, it is not necessary because inquiry is just like information, raw information that you have it. तो वो ऑप्शन हो सकती है। Again, on the inquiry level, information that you have it, product, it could be, means it's just like a narration that you have it, optional है, not mandatory. अगर inquiry के अंदर आपके पास information further है, then you are going to go with the adding the product and services there. Again, the inquiry can be converted to the opportunity. आपके पास possible है कि आपकी जो lead है is not going to be qualified. Either you are not interested to work with a customer or customer doesn't
have the you can say intention to work with you, or किसी और रीजन की वजह से आप जो है लीड को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, बट इट्स क्वालिफाई इट्स मीन यू आर गोइंग टू मूव टू द अपॉर्चुनिटी, तो अगेन इट्स ऑप्शनल. Then again, you have the quotation. Might be possible the quotation that you are going to send. It's in terms of the business proposal. सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर भी सेम चीज है. आपके पास इनवॉइसिंग के अंदर भी ऑप्शनल है. आपके पास कंप्लेंट्स है, मींस इंक्वायरी इट्स हैज सम कंप्लेंट्स और नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्शनल स्टेटस दैट यू आर गोइंग टू पुट इट देयर. और आपके पास मार्केटिंग कैंपेन है. यस, यू नीड सम इंक्वायरीज टू बी अवेलेबल in the marketing campaign, so it's necessary for my campaigning to include the marketing stuff or to include the inquiry stuff there. And again, survey is not necessary. Whenever there is any complaint, then the user should have the option to do it. फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई कस्टमर कहाँ मेंटेन हो रहा है. अगेन, इट्स नॉट नेसेसरी ऑन द कस्टमर लेवल दैट यू आर गोइंग टू मेंटेन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सो इट्स अगेन आपके पास ऑप्शनल है. But now, if we talk about particularly on the opportunity, then it's mandatory. Means there should be a customer which is associated with the opportunity here. फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल जो कोटेशन है, अगेन द कोटेशन इज नेसेसरी, मीन द कोटेशन विदाउट एनी कस्टमर टैगिंग दैट यू आर गोइंग टू नॉट प्रोसीड फर्दर, तो यू आर गोइंग टू पुट इट मैंडेटरी. सेल्स ऑर्डर में भी ऐसी है, नॉइस में भी ऐसी है. कंप्लेन अगेन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज माय कस्टमर. तो अगर वो कस्टमर कंप्लेन है, देन देयर शुड बी अ प्लेसमेंट ऑफ द कस्टमर. एंड अगेन my existing customer, they should also be included part of the campaign. तो ये भी आपके पास है. Then you have the service. So again, you have to collect all the feedback from the customers. So again, it's the mandatory. And now, if I'm going to proceed further, आपका पूरा ये matrix आपका define हो जाएगा. And which is going to help you out which segment is necessary, optional, not applicable for that particular process. अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भाई मुझे केस मैनेजमेंट के अंदर मुझे लीड का भी लुकअप चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है. और वहां से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि इट्स अ गैप और फिट. आप केस मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट का तो हमारे पास एक होता है, बट व्हाट अबाउट द मल्टीपल प्रोडक्ट्स. सो डेफिनेटली वी हैव टू बिल्ड अ लॉजिक to cater a requirement. If the customer has the or an inquiry has a complaint on multiple products or services, that you should have the ability to do it. इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि केस मैनेजमेंट में लीड का प्रोसेस नहीं होता हमारा, तो यू कैन ऑल्सो टैग इट देयर. मीन आइदर दिस अ लीड, दिस केस इज बिलोंग्स टू अ इंक्वायरी, दैट यू कैन ऑल्सो टैग इट देयर. तो ये पूरा आपका प्रोसेस से भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई आपके मेन एलिमेंट्स कौन से हैं और वो डिपेंडेंट है. अब मैं यहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि one of the my customer information is necessary to be available and it is being tagged in each and every maximum information जो है आपकी टैग हो रही है आपके प्रोसेस में. then the product and services और inquiry is just like informational data है that you are going to manipulate or you are going to work on it. ये आपको पूरा का पूरा एक डिफाइन कर देगा एक हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द टाइम दैट यू आर असेसिंग द बिजनेस प्रोसेसेस, existing business processes or to be business processes. So there could be a multiple version that the document that you are going to maintain. और इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे आसान हल जो होता है वो एक्सेल है. यू कैन यूज द एक्सेल और यू कैन यूज पावर पॉइंट टू बिल्ड सच सिनेरियोस देयर. और इसका आपको फायदा ये होगा कि आप बड़े इजीली हाई लेवल इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो इन अ सिंगल नोट एंड यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल देयर. अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है कि भाई हमारे पास जो डिसीजन जो हमने ले लिए हैं, जो हमने पैटर्न्स डिफाइन कर लिए हैं, उनकी चेकलिस्ट क्या होगी. तो checklist, it could be anything, but I prepare only 4 major items here, but it could be extended more. इसमें आपके पास क्या है कि भाई आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है उनकी जो रिवैम्प करना है, इट्स इन प्रोग्रेस, इट्स स्टिल इन रिव्यू और इट्स कंप्लीटेड. So it's a complete information that you are going to grab it there. Second thing is जो आपके न्यू प्रोसेसेस एड अप होने लगे हैं उनका आपके पास क्या स्टेटस चल रहा है. देन व्हाट आर द फिट गैप्स. ये डॉक्यूमेंट रेडी हैं, डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर है कि जो आप स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी यूज करने लगे हैं, जो ऑलरेडी बिल्ड एक सिस्टम है उसको आप यूज करने लगे हो, तो वो स्टैंडर्ड ही आप यूज करोगे
या आप उसको कस्टमाइज करोगे, या bespoke होगा, या डेवलपमेंट है, या थर्ड पार्टी कंपोनेंट आपको यूज करने लगे, तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन फिट गैप के अंदर डाल रहे हो। आप उसका भी स्टेटस आप मेंटेन करो कि भाई ये इन प्रोग्रेस है, ये मेरे पास जो है रिव्यू के अंदर है, या मेरे पास एक कंप्लीटेड स्टेट के अंदर है। Then you have also the solution components R&D, because whenever you are moving from one end to another end, then you have to be more focused on the R&D stuff, and whatever the finding that you have it, you must document this one, and you must review it before that you are going to apply, and it should be documented in a well manner. Then उसके बाद आपका more important thing आती है जो कि data migration strategy है, कि how you are going to migrate the existing data. अब न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगेन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर डेटा माइग्रेशन है। तो उसके लिए आप पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन करोगे, उसमें आप पूरा डिफाइन करोगे कौन से आपने डाटा को माइग्रेट करना है, किस लेवल को करना है, उसकी डाटा क्लिनजिंग का, डाटा वॉल्यूम का, क्योंकि अगेन यू हैव टू कंसिडर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डाटा एज वेल एज द स्टोरेज दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम ऑनलाइन में। डेफिनेटली आपके पास एक लिमिटेड स्टोरेज है, देन यू हैव टू रिड्यूस डाउन एंड यू हैव टू री डिजाइन योर डेटाबेस स्ट्रक्चर, आइदर what information that you can put it there on the real-time database, or what are the data you can put it on the data warehouse, or any segmentation that you can put it there, तो it पूरा define आप कर दो। और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आप वहां पे डिफाइन करते जाओगे, यस दिस इज द चेकलिस्ट आई हैव डन, और मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट भी आ जाती हैं कि अगेन फॉर ईच एंड एवरी स्टेज दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी वुड रिक्वायर। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी मर्ज टुगेदर और इट कैन बी पुट इन अ सेपरेट वे। तो अगेन इसमें जो स्टेजेस वाइज जो हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं वो किस तरह के बना रहे हैं। इसमें आपके पास पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो तो आता है डायग्नोसिस स्टेज के अंदर, जिसके अंदर you are going to put all the processes stakeholder identification, you are going to put the questionnaire preparation, you are going to ask the users about their stories, means what are the execution, what are the patterns, what are the requirements that you are looking for it। आप उनसे पूरा डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो based on the three information that you have received earlier, that you are going to start building the BRDs, business requirement document। अच्छा, इसमें बहुत से ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपको बीआरडी खुद से बना के दे, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप खुद बना रहे हो, लेकिन मोस्टली इट हैपेंस द कस्टमर प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेक होल्डर्स एंड दे प्रोवाइड द यूजर स्टोरीज। क्वेश्चन है एज अ कंसल्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर कि भाई आपने उससे पूछना है क्या, उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस प्रोसेस के हवाले से, उसके सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं, जो की एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगे। देन यू हैव द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कि भाई जो बीआरडी दी है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, सिस्टम कैसे चलेगा, क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें की एलिमेंट इसके अंदर डालोगे। Then you have the analysis stage. In the analysis stage, you are going to design, put the design in a document which is called as a functional design document. फिर आपका solution design document है कि भाई solution होगा कैसे, and most importantly based on the FRD and the SDD you are going to work on the fit gap. अच्छा, fit gap document, it could be possible that you are going to start at a diagnosis stage, not necessarily you have to go to the analysis stage। तो वो आपके डिपेंड करेगा उसके ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूशन के अंदर ही चल रहा होगा तो फिट गैप आपका वहीं पे बन रहा होगा, और वहीं पे भी आपका आप ही कहना है कि साइन ऑफ आपको वहीं से निकल होगा कि भाई इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स, कौन से प्रोसेसेस, कौन सी रिक्वायरमेंट जो फिट हैं, जो होंगी, इन स्कोप है, और कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कोप हैं या गैप्स हैं और जिसके ऊपर एडिशनल एफर्ट करनी पड़ेंगी। Then again, if you are going to work on the mid to enterprise level of the application, then there will be integration. The integration could be from the ERP solution, it could be from third-party solution, it could be from websites or open APIs. So again, you have to put the integration testing scenarios on the documentation, and most importantly, use acceptance test आपको उसी दौरान बन जाएंगे कि जब आप फंक्शन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे या फंक्शन डिजाइन डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे, and then you are going to put the scripts here. Again, most of the times, user or business, they are considering, they are you can say responsible to do it, but again on the other hand, in most of the scenarios ये भी होता है कि कंसल्टेंट ही बैठ के यूएटी स्क्रिप्ट्स बना के दे रहा होता है।
देन एग्जीक्यूशन के अंदर आपके पास मेन है कि भाई जो आपका गैप फिट के अंदर चीजें निकली हैं, जो आपके सोल्यूशन डिजाइन के अंदर जो बातें हुई हैं, या जो फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने एक पूरा एक कंटेंट मेंटेन किया हुआ है, उसमें कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट्स क्या है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या लिस्ट ऑन हुई है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू पुट इट हियर, एंड बेस्ड ऑन इट यूजर स्क्रिप्ट को हम यूज कर रहे होते हैं वहां पे फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, कि भाई जो हमने यूजर ने इसको एक एग्जीक्यूट करना है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स दे आर गोइंग टू टेक इट, व्हाट आर द स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक इट, you are going to also test it in your development or a UAT environment. उसी बीच में हम रिव्यू असेसमेंट डॉक्यूमेंट भी चल रही होती हैं कि जिसके अंदर आप पूरा का पूरा जो भी आपने वर्कआउट किया है उसका आपके रिव्यूज आप कलेक्ट कर रहे होते हो फ्रॉम इंटरनल टीम, फ्रॉम एक्सटर्नल टीम, एंड यू आर गोइंग टू असेस देम. अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि बिकॉज वट एवर यू हैव एग्रीड टू द कस्टमर बाय द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एंड एनालिसिस, but there could be issues identified at a later stage. So again, you are going to track it down in a issue tracking document there, or it could be issue tracking risk document. तो आप उसको भी नाम दे सकते हैं इसको. Then by the time you are going to deploy, तो आपका एक solution notes होंगे जिसके अंदर आप पूरा का पूरा डिप्लॉय मतलब रिलीज नोट्स उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं कि भाई कौन से कंपोनेंट आप लेके जाने जा रहे हो, कौन सा एलिमेंट्स होंगे, कौन से वर्कफ्लोज हैं, प्लगइन्स हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट्स हैं, आपकी वेब सर्विसेज हैं, वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो, फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, फिर आपका जो बाय द टाइम दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन ट्रेनिंग एंड यूएटी, देन यू आर गोइंग टू कलेक्ट द रिजल्ट्स ओवर देयर. देन फिर आपके पास चेंज ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल देयर आर possibilities that you are going to change some of the practices, you are going to change any, you can say, functionality. Might be possible customer has requested you to add some new functionality or remove the functionality, to a change tracker के अंदर maintain हो रहा होगा. And definitely by the time that you have prepared with the deployment, then you should be ready with the go live checklist. और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि भाई जब आपने गो लाइव स्टेज पे चले गए हैं, देन यू हैव द सॉल्यूशन रिलीज नोट्स व्हिच इज गोइंग टू प्रिपेयर, देन द माइग्रेटेड डाटा इनसाइड, सो व्हाटएवर द डाटा इज माइग्रेटेड आप उसके क्वालिटी चेक कर रहे हो, देन इशू ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट अगेन इट कम्स हियर, बिकॉज बाय द टाइम द डिप्लॉयमेंट इज गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कैप्चरिंग दोस इंफॉर्मेशन, एंड सोल्यूशन से रिलेटेड आप इंसाइट्स को कलेक्ट कर रहे हो तो कि भाई उसकी हेल्थ क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसमें फेलियर्स तो नहीं आ रहे, कंपोनेंट्स में फेलियर्स तो नहीं आ रहे, वो आप मेंटेन कर रहे हो. अगेन देयर इज अ चेंज ट्रैकर, माइट बी पॉसिबल आफ्टर द गो लाइव कस्टमर हैज द रिक्वायरमेंट टू चेंज एनी बिजनेस मॉडल देयर. तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप मेंटेन कर रहे होते हो, उसके अंदर आप जस्ट मेंटेन कर रहे होते हो कि ओके दिस इज व्हाट वी हैव डन 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 एंड व्हाटएवर इज रिमेनिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इट. Then in the last I have some Sorry, consideration Adnan, point. just Yes. a quick time check. We have 2 minutes left. Just a quick time check. No problem. Okay. I just need maximum 5 minutes. Okay. Thank you. So in the consideration, क्या हमारे पास important thing है कि because we are working on the Dynamics platform, there are different versions are there. Online is there, on-prem is there. अब उसमें new implementation है, आपकी upgradation है, new process addition है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या consideration होनी चाहिए by the time that we are planning to change the business model or to upgrade it in a new, you can say, environment. तो पहली चीज आपके पास रहती है difference in interface. Because in the on-prem, there's a different interface, legis interface, and UCI interface in online. Even though in the 9.1 version on-prem, again, it's similar to UCI. Lekin again, there are some differences in the different platforms. Similar way, अगर मैं बात करूं कि आपके पास आप model driven app में हो, now you are going to go in the Canvas app. What are the differences are going to happen? So you have to consider about those elements also. By the time that you are going to upgrade, there's a custom code validation, whatever the customization was made earlier in that particular environment, then you have to validate all the code validation कि आपके पास source code होना चाहिए, code के अंदर क्या change होगा, क्योंकि definitely there are some information or there are some syntax are deprecated, there are some features are deprecated और framework में update आ गया, तो वो सब चीजें आप उसको validate कर रहे होगे इसके अंदर. Then आपके पास more importantly again बात आ जाती है historical data migration की, then you should be ready with the data migration plan. और बहुत ज़्यादा important है the consultant who are working on any particular solution which is proposed to the customer, he should aware about deprecated features and what is the replacement. मिसाल तौर पर dialog जो है वो आप deprecate हो गए,
So what is the strategy? How you are going to do it? Either you are going to work on the Power Automate or you are going to work on the action. So what strategy that you are going to take it? Similar way, आउटलुक क्लाइंट नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट वे क्या है तो यू शुड नो अबाउट द डेप्रिकेटेड फीचर्स एंड व्हाट इज द रिप्लेसमेंट और अपग्रेड विद द ऑल्टरनेट ऑप्शन ये उसका क्या हो सकता है then simplification of business logics might be possible because the legacy environment से आप अपग्रेड कर रहे हो न्यू environment में तो might be possible कि उसके अंदर बहुत सारे जो है कस्टमाइजेशन हुई हो but you can simplify so by applying the simplification rule you can also simplify the business logics there. Then you have the upgrade of the JavaScript कि आप JavaScript के या तो क्योंकि इसमें आप जैसा आपको पता है क्या XRM जो है XRM.page वो deprecated हो गया there is new way to do it. So what are the possibility that if you can use the business rule instead of JavaScript or directly upgrade and validate the JavaScript code, then use it of the business process flow because there are some strategies that you are going to do it. So what are the factors that if you are going to apply so you can use it? Then what could be the possibility that for the background processes, आप Power Automate के ऊपर ले जाओ उसको process को. Then what are the integration and reports? That's important because integration might be possible that there are some challenges are there or what could be the possibility of the report because in the on-prem that you can write the SSR report by using the SQL, but it's not possible. So what is the strategy that you are going to do it by the time that you are going to go online? Same way for the integration. On-prem integration अलग scenario पे है, online की अलग scenario पे है. So what are the alternate ways or what is the strategy that you are going to perform to do the integration as well as building the reports there? Then if there is any third-party solution, उसकी upgradation के क्या होगा? Then security rules because the business logic is changed, business model is changed. So it's going to be applicable. And most important thing that you can come here with business user training because by the time that you are going to move the business user from one system to another, so it always be a challenging because they are much more comfortable zone in that particular area. तो आप उसको नया system देंगे तो definitely you have to give them a very comprehensive training and then the system adaptation because new revamps आ रहे हैं, new changes आ रही हैं तो उसमें सिस्टम को यूज भी होना चाहिए और आपने इनकरेज भी करना है आपने इंटरनल पॉलिटिक्स एक्सटर्नल पॉलिटिक्स resistance you have to cater so by applying to make sure that the system is being used तो वो उसको आपको सक्सेसफुल जर्नी में लेके आना है so it's all the end of my discussion let me know if anyone has a question कोई point okay है Yeah, we have a couple of questions in the chat, Hmm. but if you can answer that, it would be great. Uh, and we will be now. I will really appreciate Adnan for your time today again, uh, especially over a weekend. और अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा स्पेशली जिस चेंज मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बहुत से लोगों को उसकी बेसिक डेफिनेशंस का भी अंदाज़ा नहीं होता तो इट्स गुड टू सी यू कवरिंग दिस सेशन एंड बाय द वे एवरीवन ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा अगर कोई इन केस मिस कर जाते हैं सेशन तो डोंट वरी यू कैन ऑलवेज rejoin check on our Pakistan user group page to Perfect. learn again about it. So thank you Perfect. again Adnan. Our Really appreciate it. next yeah okay. So there are some questions Adnan if you can offline आप chat पे इस पे respond कर दें तो it would be really great. No problem. No problem. I will take care of it. No problem. Thank you Okay. Thank you. so Really appreciate thank you everyone. So our next speaker